Hello students, the question is bacteria lack alternation of generation because there is A. Neither syngamy, no reductional division. B. Distinct chromosomes are absent. C. No conjugation. D. No exchange of genetic material. तो बच्चे सबसे पहले समझो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है. Alternation of generation means when an organism shows diploid phase as well as haploid phase in a life cycle. Life cycle में चाहे short time period के लिए diploid and haploid दोनों phases आ रहे हैं तो that is called alternation of generation. And alternation of generation haploid and diploid दोनों phases कब दिखाए जा सकते हैं diploid और haploid phase? When an organism undergoes sexual reproduction थ्रू गैमीट फॉर्मेशन. वहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो मियोसिस होगी. गैमीट फॉर्मेशन मींस इन्वॉल्व्ड इन मियोसिस एंड देन सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी. ये दो इवेंट होंगे तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी. बट इन बैक्टीरिया देयर इज नो सिनगैमी एंड नो रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. सो इसीलिए वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं दिखाएंगे. बट they show conjugation and bacteria show conjugation for the transfer of genetic material as well as, and this conjugation is called exchange of genetic material. Means in bacteria conjugation occur for the transfer of genetic material or exchange of genetic material, but no meiosis, no fertilization, syngamy occur. So the correct option here is option A, that is neither syngamy nor reductional division. Thank you.